हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू आर डूइंग गुड। तो आज जो हम लोग है 11th क्लास की लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला चैप्टर जो होगा अपना, ऑफ कोर्स जहाँ से शुरू होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर 11th ग्रेड का चैप्टर अब शुरू करिए क्योंकि न्यू सेशन शुरू हुआ है, तो हम लोग वही आज से शुरू करने वाले हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, let me share my screen with you all. Yes. So this is our first chapter that we are going to study, that is units and measurement, right? So units and measurement में what do we measure actually? Okay, what are we measuring here? So actually we are measuring all the physical quantities, right? अब physical quantities क्या होती हैं? Those who have not visited the previous lecture, please जा करके देख लो वहां पर जा करके। We will be measuring physical quantities. Okay, in this chapter we means wherever we measure anything. Okay, so what do we measure? We measure physical quantity. Physical quantity क्या होती है? Anything that we see around, जिसको भी measure किया जा सके directly और indirectly, ठीक है, जिसको भी measure किया जा सके उसको हम लोग कहते हैं physical quantity। ठीक है, अब मेजरमेंट जैसे मैंने बोला कि कैसे भी कर सकते हैं, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ईदर दे कैन बी डायरेक्ट मेजरमेंट, there are two types of measurement, direct and indirect measurement. Okay, so there are two kinds of measurement, first is direct and next is indirect measurement. Now what are units of measurement? Units मतलब कि किस किस यूनिट में हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। लाइक देयर आर FPS यूनिट, MKS यूनिट, CGS यूनिट, और उसके बाद में इन सबका बाप दैट इज आवर SI यूनिट। FPS मतलब क्या हो जाएगा, ये आई होप यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। सो आई एम इरेजिंग एवरीथिंग हियर। तो FPS मतलब क्या हो जाता है तुम्हारा, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। FPS दैट मीन्स फुट, पाउंड एंड सेकेंड्स। ओके, फुट, पाउंड एंड seconds. Next is our MKS system, that is meter, kg and second. Okay, wait. Next comes our CGS unit. Okay, that means centimeter. You might be guessing by now. Centimeter, grams and second. Okay, उसके बाद आता है अपना SI यूनिट। अब ये SI जो है, दिस इज सम फ्रेंच और लैटिन नेम, स्टैंडर्ड स्टैंडर्डे इंटरनेशनले, डोंट बॉदर अबाउट इट, इतना याद रखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सब बचपन में हमने पढ़ा है, थोड़ी सी बस ब्रीफ है ये, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट इज दिस वन, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस वन, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चंस आस्क कि कन्वर्ट SI यूनिट इनटू CGS यूनिट। बस बाकी बस जान लो कि हाँ यही है, इतना जो है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देर आर टू, यहां पर मैंने बोला था कि वी मेजर व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? तो फिजिकल क्वांटिटीज आर बेसिकली ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है अपनी, फिजिकल क्वांटिटीज, they are of two types. Okay, first one is fundamental and another one is derived. Okay, so these are the physical quantities. कौन सी, fundamental और derived. So what is the basic difference between fundamental and derived physical quantities? तो basically fundamental quantities are those quantities, चाहो तो ये definition लिख लो, ठीक है, स्लो करके। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड। ठीक है, ये हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन द अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, डिपेंड ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज और दे कैन बी डिराइव्ड यूजिंग अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज का तुम्हारा एग्जांपल क्या हो जाएगा? दीज आर द
examples of your fundamental quantities. There are total 7 fundamental quantities. ये बात याद रखना कि there are total 7 fundamental quantities. Okay, length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. All of this we will study in this course of 2 years. Okay, that is 11th and 12th. तो एक बेसिक सा बस लॉजिक समझना, अगर कभी कंफ्यूजन हो कि क्या इनमें से कोई भी ऐसी क्वांटिटी है कि मतलब जिसको मैं किसी और तरीके से मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, किसी फॉर्मूला को यूज करके मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, बेसिक चीज ये है कि किसी फॉर्मूला को यूज करके क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूँ. तो इफ दैट थिंग इज कमिंग इन माइंड कि हाँ, देन दैट इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी. जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. So displacement you can measure using scale, right? Time, you just start a timer and you will get, right? So these are direct measurements that we are doing. Okay, directly we are measuring it. So those are fundamental quantities. What? Length and time are fundamental quantities. These length, ठीक है, ये टाइम, ये मैं कोई फॉर्मूला लगा करके मेजर नहीं कर सकता हूं. अब तुम कहोगे कि सर ऐसे तो v इज इक्वल टू s बाई टी होता है सॉरी s by t होता है, where s is displacement, right? तो s is equal to v into t कर दो, ठीक है. But again, how you are going to measure v cannot be measured directly, right? v you cannot know until and unless you know the displacement and time, ठीक है. तो ध्यान से समझो इस बात को कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 क्वांटिटीज होती हैं. वो कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर, बेसिक जो टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ओके, then comes derived units or derived quantities. Okay, so derived quantities में क्या है? इन सबको मिला करके, ये सबको मिला करके जो भी कुछ तुम बना सको, ठीक है, दे आर योर derived quantities. जैसे कि लेंथ को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं, breadth is again a kind of length only, right? So we get what? Area, right? If I multiply it 3 times, length into length into length, we get what? Volume, right? If I divide mass by length cube or volume, I get what? Density. So these are what? These are your derived units. You can see that I am deriving each and one of them, right? So that's why they are called as derived units. Now there are few supplementary units also, ठीक है. Supplementary units का क्या है तुम्हारा? रेडियन और स्टेरेडियन. These are dimensionless quantities. Okay, अब पूछोगे डायमेंशन क्या होता है? दैट आई विल टेल. दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. बस इतना याद रखो, ठीक है, इनका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है. रेडियन एंड स्टेरेडियन. रेडियन मेजर्स योर एंगल, ओके, एंड स्टेरेडियन मेजर्स योर सॉलिड एंगल. लिख लो, रेडियन मेजर्स एंगल एंड स्टेरेडियन मेजर्स सॉलिड एंगल, ठीक है, इतना ध्यान रखो. तो रेडियन को हम लोग किसमें, हम लोग रेडियन मींस व्हाट की हाउ मच एंगल a line has rotated or any body has rotated this theta, that is that how many radians has it rotated. Okay, that is the unit of angle, radians. Till now means till lower grades you must be doing in degrees, okay, but the standard is again SI unit. If we say, then that is your radian. Okay, so 360 degree corresponds to 2 pi. Okay, if a body has rotated 360 degree, पूरा का पूरा अगर ये 360 degree rotate कर जाए, okay, then we will say that this has rotated by 2 pi. So 180 degree will be pi. Okay, 180 degree will be pi. 90 degree, what will be 90 degree? 90 degree will be pi by 2. साथ में करो. 60 degree, 60 degree will be your pi by 3, right? And 45 degree will be pi by 4, right? 45 degree will be pi by 4, and 30 degree will be pi by 6. Okay, ये इतना नोट कर लो. 360 degree is 2 pi,
180 degree is pi, 90 degree is pi by 2, 60 degree pi by 3, 45 degree pi by 4 and 30 degree is pi by 6. ठीक है, इतना ध्यान रखो. So this is how we measure angle, okay, in SI units. Next is your steradian, that is your solid angle. Let me erase all of them. I hope you would have written. Pause करके लिख लो अगर नहीं लिखा है तो. ठीक है. Now steradian measures your solid angle. Solid angle मतलब क्या होता है कि जैसे कि angle is your 2D. ठीक है. Angle is 2D quantity, right? Angle is your 2D quantity. This is theta. This is how we denote angle theta. So, एक angle है. Suppose this is the angle. If I fix this one line, okay, I fix this line and I rotate it this way, okay. So what will happen? It will make a cone-like structure, right? It will make a cone-like structure. ठीक है. तो ये जो पूरा हुआ एंगल है, ये पूरा एंगल दिस, ठीक है, दिस पूरा, okay, that means angle का 3D thing that is called as your solid angle, okay, solid angle, जहां पे angle was measuring your 2D quantity, okay, 2D quantity means angle was 2D quantity, right, in two-dimensional plane it was moving, whereas solid angle entirely covers your 3D structure, okay, जहां पे एक एंगल को अगर हम लें और उसको पूरा स्ट्रेच कर दें, ठीक है, एक एंगल को अगर मैं 0 से ले करके 2 पाई या 360 डिग्री अगर रोटेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक मैं एंगल को लूं ऐसे, ठीक है, और उसको मैं पूरा पूरा ऐसे 360 डिग्री या 2 पाई एंगल में रोटेट कर रहा हूं, सो व्हाट विल आई विल गेट अ सर्कल, राइट, आई विल गेट अ सर्कल 360 डिग्री या फिर 2 पाई रोटेशन पे आई विल गेट अ सर्कल, राइट. Similarly, if I take a solid angle, okay, if I take a solid angle, so what will I get? Guess. Yes, we will get a sphere. Very good. We will get what? We will get a sphere. अभी sphere तो यहाँ पे बना नहीं सकता मैं. So the complete rotation of a solid angle is your 4 pi. Okay, complete rotation of solid angle is 4 pi. That is why the total surface area of a sphere is what? 4 pi r square. ठीक है. जिनको नहीं पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, प्लीज जाकर के देख लेना 8th वाले में. सो दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर, okay, because we are rotating a solid angle entirely, like we were rotating 2 pi the plane angle, right, the normal angle. So here if we rotate, it is moving in 3-dimensional plane, right? So that is how this 4 pi term comes, okay. इस तरह से तुम्हारा 4 पाई आता है. चलो, अभी ये एक चीज है, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, ठीक है. नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसको ध्यान में रख लेना. उसके बाद देयर इज नथिंग मच इंपॉर्टेंट इन दैट एंड आई विल मार्क दोस थिंग्स, ओके. कौन कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहले तुम्हारी उसमें एक हो जाएगा तुम्हारा गीगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. मेगा इज इंपॉर्टेंट एंड टेरा, चलो छोड़ो इसको इतना, लेट इट बी. किलो इज इंपॉर्टेंट, सेंटी is important, milli is important, micro, nano, pico, femto. These are important ones. इतना तो at least you must remember. ठीक है, you must be seeing कि इनमें सारा 3 की पावर में ही चल रहा है. ठीक है, बस एक ये सेंटी वाला जो है that is your 10 to the power minus 2, बाकी सब 3 की पावर में चल रहा है. ठीक है, so these are important ones. इतना ध्यान में रखो, बाकी rest are not that important. Okay, now coming to the next part of the chapter, means not next part, इसी में एक आगे बढ़ रहा है next part और lecture का next part that will be uploaded later. तो लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्केल से. मीटर स्केल जो नॉर्मल अपनी स्केल होती है, दैट इज आवर मीटर स्केल. हाँ, उससे छोटा अगर हमको मेजर करना हुआ, तुमने कई बार देखा होगा कि जो अपनी मीटर स्केल है, देयर आर सम ग्रेजुएशंस मेड देयर. सॉरी. This is how the markings are there, right? This is how markings are there. तो ये कई बार ऐसा होता है कि सपोज वी आर मेजरिंग समथिंग, और वो जो चीज है, द थिंग दैट वी आर मेजरिंग, इट कम्स समवेयर हियर, यहाँ बीच में. ठीक है, सो व्हाट डू वी डू? सपोज ये है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का मार्क,
और ये है 3 सेंटीमीटर का मार्क. Okay, so what do we say? That the measurement is 2.5 centimeter, right? We assume कि हाँ जहां पर ये आया उसके जस्ट पहले वाला ये वाला मार्क हम लोग ले लेते हैं, right? But what if I give you a scale which has even large number of divisions? ठीक है, इसके बीच में ये 1 mm जो है तुम्हारा, ठीक है, सपोज दिस 1 mm, इसके भी बीच में सपोज दिस इज 1 mm, ठीक है, और इसके बीच में आई गिव यू 10 डिविजन्स, फाइन. सो वॉन्ट इट बी मोर एक्यूरेट? थिंक yes. So such a scale is vernier calipers, right? And next comes, so it gives you even more precise reading. How? That we will cover in next lecture. Next is your screw gauge. Okay, now this screw gauge is even more precise. This 1 mm which is there, okay, this 1 mm is generally divided in 100 small divisions. Okay, we divide it in 100 small divisions, so it gives preciser value as compared to vernier calipers also. Okay, so this is another scale, screw gauge. Then spherometer is like similar to screw gauge, but it measures depth of certain curved things. Okay, here you cannot measure this depth using a normal scale, so for that we use spherometer. Okay, so these are direct methods. Just put the scale and get the measurement. Now suppose if you have to measure length of a pole, a very high pole, right? So how you are going to measure it? You are not suppose maximum length of that inch tape that we having, or measuring tape, that is like 5 feet. Okay, on the field we use like 80 feet tape, right? So how, suppose the height of the building or the pole is suppose we have to measure Burj Khalifa, how we are going to measure it? Surely we are not going to keep the inch tape or the measuring tape at the base of the Burj Khalifa और उसको ऊपर तक लेकर के चले जाएं, ऐसा तो नहीं होगा. ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वी विल यूज दीज मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स. ठीक है, हमको सन की लेंथ हमको सन की लेंथ बोल रहा हूँ, सन की डिस्टेंस जाननी है, या हाँ सन का डायमीटर जानना है, ठीक है, कोई स्टार की डिस्टेंस जाननी है. सो फॉर दोज लार्ज मेजरमेंट्स, ठीक है, इतने बड़े बड़े मेजरमेंट, हाउ डू वी डू यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, ये हर एक इनडायरेक्ट मेथड पे we will cover it in a separate class. Okay, so continue on this series. Okay, चलो. So डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड समझ में आ गया. डायरेक्ट मतलब सीधा स्केल रखा और नाप लिया. इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि we will have somehow there is some problem coming, कि जिसके कारण से हम लोग को डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, या तो वो बहुत बड़ा है या वो बहुत दूर है, तो हम लोग यूजिंग सम मैथमेटिक्स एंड सम फॉर्मूला we will indirectly try to find out the length of, or the measurement, or sorry, or the distance of that particular substance. Okay, so see you in the next lecture.